Hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and in the previous video we have successfully completed exercise 10.5 of chapter number 10th, that is circles, up to question number 9. Now in this video we are going to move ahead from that. That means we are going to discuss this video from question number 10, right? Now let me just tell you, we are reaching towards the end of this chapter. So understand the remaining questions carefully, and also one more thing here, that the theorems are the base of this chapter. So आप जितना हो सकता है theorems को clarify कर लीजिए and revise कर लीजिए so that you can easily solve the question based on this chapter, right? So let us start this video with question number 10. So यहाँ पे इस 10th question के अंदर given है, if circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side of the triangle, right? So यहाँ पे सबसे पहले मैं इस पूरी कंडीशन को डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूं. So यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल की दो साइड्स को एज अ डायमीटर लेके सर्कल का दो सर्कल ड्रॉ किए हुए हैं. So let me first draw the diagram here. So यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं. सबसे पहले आप देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल की दो साइड्स में यहां पे लेने वाला हूं, ये वाली और ये वाली. नाउ ये दो साइड्स में लूंगा और ये दोनों साइड्स क्या है, सर्कल के डायमीटर का काम करेंगी. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ फर्स्ट सर्कल हियर टेकिंग दिस एज द डायमीटर. सो लेट मी जस्ट like this. So my circle cannot be very clear, but just you have to understand the question, right? Let me just correct that. Right, so आप देख सकते हैं यहाँ पे if I just little bit lesser this, so that will be I think better. Right, now it looks a better way, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो triangle की एक side है वो इस circle का diameter का भी काम कर रही है, right? Now taking the another side of this triangle, मैं यहाँ पे भी इसको as a diameter लेके एक और circle draw करूंगा. Let me just draw that. Right, so my circle is a little bit lazier, you can see, but that doesn't mind because we just have to understand the concept here, right? So आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो sides ली triangle की और उनको as a diameter लेके मैंने दो circles draw कर दिए, right? Now this is according to the question. आप देख सकते हैं यहाँ पे दो sides of a triangle taken as diameter, we have drawn two circles, right? अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों circles जो बने हैं वो एक point पे intersect कर रहे हैं, right? Now we have to prove that ये जो point of intersection है इन दोनों circles का वो क्या है, सर्कल की थर्ड साइड पे लाई करता है, राइट? यानी कि ये थर्ड साइड है. आप देख सकते हैं ट्रायंगल की दो साइड्स को लेके मैंने सर्कल ड्रॉ किया तो ये थर्ड साइड हुई. नाउ ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का ये थर्ड साइड के ऊपर लाई कर रहा है. दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, right? So I hope you have understood the question here. So let me first give the name to the triangle, right? So A, B and C. Now let me just give this point of intersection as D. So आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया. Now you can see clearly कि ये जो AB है वो इस सर्कल की डायमीटर भी है और ट्रायंगल की साइड भी है. Similarly AC जो है वो इस सर्कल की डायमीटर भी है और ट्रायंगल की साइड भी है. So यहाँ पे दो साइड्स लेके मैंने दो सर्कल्स ड्रॉ किए. देन वी हैव टू प्रूव दैट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन lies on BC, that is the third side of the triangle, right? So let me just start off my solution here. Let me first change the marker. So the first thing, let me just tell you कि अगर आप given thing लिख लेते हैं पहले यहाँ पे. So you can see क्या given है हमें, that you can see AB and AC you can see, let me just write that AB and AC are the
sides of a triangle ABC, and as well as, let me just change the marker here, as well as you can see the diameters for two circles, right, intersecting at, let me just correct that, you can see point D. So you can see मैंने यहाँ पे लिखा है that AB and AC are the sides of a triangle ABC, you can see here, and as well as the diameters for two circles. You can see AB is the diameter of the first circle, AC is the diameter of the second circle. Now both the circles intersect at a point D, right? So this is what is given in the question here. Now let me just write to prove. So we have to prove that this point D lies on the third side of the triangle, that is BC, right? So हमें यहाँ पे prove करना है that D lies on, let me just correct that, D lies on BC, right? So let me just tell you how we will prove this. We will prove this by a theorem here, जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ. You can see if I just draw a rough circle here, you can see. Now we know that the diameter which passes through the center of the circle, let me just give it a name as AB here. So यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो diameter है जो कि center of the circle में से pass out होती है, that is also the longest chord here, right? ये हमें पता है कि diameter जो होती है वो क्या होती है, longest chord होती है circle की. Now ये जो diameter यानी कि जो chord है वो center पे कितना angle बना रही है आप देख सकते हैं 180 डिग्री, right? So that is always the same thing कि जो diameter होता है which is the longest chord makes 180 degree angle at the center. So हमें ये भी पता है एक you can see theorem की हेल्प से कि जो chord center पे angle बनाती है वो क्या होता है, double होता है किसका, जो वही chord remaining part of the circle पे angle बनाएगी, right? So यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा फिर इसका हाफ, यानी कि ये डबल हो गया तो इसका क्या होगा हाफ, तो 180 का हाफ कितना होता है 90 डिग्री, राइट? सो ऑलवेज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल व्हिच इज द लॉन्गेस्ट chord makes, you can see 90 degree angle at the remaining part of either of the semicircles, right? So आप देख सकते हैं डायमीटर इसको पहले दो सेमीसर्कल्स में डिवाइड करता है, तो चाहे वो इस वाली you can see remaining part में हो चाहे दूसरे remaining part में हो, right? So always in both the semicircles जो diameter होती है वो remaining part पे कितना एंगल बनाएगी 90 डिग्री का. So similar structure exists here. So अगर आप ध्यान से देखें इस सर्कल को तो ये AB इसका डायमीटर का काम कर रही है, यानी कि अब आप देखिए ध्यान से कि ये जो डायमीटर है AB वो आप देखें अगर मैं इस A और D पॉइंट को ज्वाइन कर दूं so as to make a common chord, राइट? सो आप देखेंगे कि ये जो AB डायमीटर है वो इस पॉइंट D के ऊपर कितना एंगल बना रही है, यू कैन सी 90 डिग्री, राइट? क्योंकि हमें पता है दैट द डायमीटर ऑफ सर्कल मेक्स 90 डिग्री एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, राइट? यू कैन सी हियर. सो ये डायमीटर AB जो है आप देख सकते हैं D पॉइंट पे क्या एंगल बना रही है ADB, राइट? सो दैट विल बी 90. सो लेट मी फर्स्ट राइट दैट थिंग हियर. सो आई एम गोइंग टू इरेज द क्वेश्चन नाउ. Now, we know that the diameter, which is the longest chord, let me just change the marker, makes, you can see 90 degree angle at the remaining part of the circle, that is at point D, right? So you can see here, so ये angle ADB कितना हो जाएगा 90 degree. So let me just write that thing. So angle ADB is equal to 90 degree. Now let me further make some space. Now similarly अगर आप ध्यान से देखें तो AC जो है वो दूसरे सर्कल का डायमीटर है. Now again ये भी सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा 180
दैट मीन्स रिमेनिंग पार्ट पे कितना इसका हाफ एंगल बनेगा. सो आप देख सकते हैं ये जो AC है D पॉइंट पे कितना एंगल बना रही है ADC, दैट विल ऑल्सो बी ऑफ 90 degree, right? So now you can see similarly, you can see AC, which is the diameter of other circle, will also make 90 degree angle. Let me just change the marker at point D, right? So that is, you can see angle ADC will also be 90 degrees, right? So आप देख सकते हैं now ADB भी 90 डिग्री है, ADC भी 90 डिग्री है. So total एंगल कितना हो गया ये 180. Getting my point? So हमें पता है 180 डिग्री एंगल किसका होता है स्ट्रेट लाइन का, राइट? सो अगर ये BC स्ट्रेट लाइन है, दैट मींस ये D पॉइंट इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है. सो यू कैन सी दैट मींस that D lies on the third side BC of the triangle ABC, right? Which we have to prove in this question. So let me just write that thing here. Now you can see that angle ADB plus angle ADC is equal to 90 plus 90 equal to 180 degree. That means that BDC is a straight line. Right? So you can see D lies on BC. So अगर BDC एक straight line है, that means D क्या है उसी लाइन पे ऊपर lie करता है. That means D lies on BC, which is the third side of the triangle, right? So quite easy question. Just you have to keep the focus on the theorems so that you can just apply on the right logic there to solve the question, right? So that was all in this question here. So students, let us move on to the next question now. So you can see question number 11th is given as, you can see ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC, right? Prove that angle CAD is equal to CBD. So यहाँ पे सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. You can see according to this given condition. So यहाँ पे दो right triangles हैं ABC and ADC with common hypotenuse AC. So यहाँ पे मैं कैसे ड्रॉ करूंगा इस डायग्राम को? Let me just show you with the help of a circle. So you can see मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया. So now let me just tell you, अगर मैं यहाँ पे इसका AC as a diameter ले लूं, right? So I have given the diameter as AC of the circle. So मुझे पता है कि ये diameter जो है right angle बनाएगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे, राइट? सो ये एंगल कितने का हो गया 90 का. लेट मी जस्ट गिव इट एज एंगल B. सो आप देख सकते हैं ABC 90 के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेनियस. सो आप देख सकते हैं मैंने एक हाइपोटेनियस AC ली, उससे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया इस पार्ट के अंदर, इस सेमी सर्कल के अंदर. नाउ दूसरे सेमी सर्कल के अंदर भी ये AC जो है डायमीटर वो कितना एंगल बनाएगा ऑल्सो ऑफ 90, राइट? सो लेट मी जस्ट टेल यू कि ये एंगल भी कितना हुआ 90 डिग्री. लेट मी जस्ट गिव इट एज पॉइंट D. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ABC और ADC दो मैंने राइट ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लिए विद कॉमन हाइपोटेनियस AC. सो आप देख सकते हैं कैसे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया विद इन द सर्कल. आप देख सकते हैं ये AC जो है कॉमन हाइपोटेनियस है दोनों ट्राइंगल्स का, which is also the, you can see, diameter of the circle, right? So let me just tell you that what we have to prove in this question, that angle CAD, let me just check out. So angle CAD, that means this angle is equal to angle CBD. So let me just tell you CBD. So CBD कैसे बनेगा जब मैं इस BD को join करूंगा, right? Like this. Now you can see angle CAD is equal to CBD. That means this angle, right? So this में मुझे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है. That means CAD is equal to CBD, right? So first let me just write down the given thing in the question. So here you can see ABC and ADC are two right triangles with common
hypotenuse AC, which is also the diameter. Let me just change the marker here, of the circle. Right, getting my point? So ये AC जो है दोनों के लिए common hypotenuse भी है, and also you can see the diameter of the circle. Right, अब you can see what we have to prove here is that angle CAD is equal to angle CBD. आप देख सकते हैं CAD is equal to CBD. ये वाले दोनों angles equal prove करने हैं. Now let me just start off the proof here. So it's quite easy question. अगर आप ध्यान से देखें यहां पर तो ये CD जो है वो एक कोड का काम कर रही है. Now हमें ये भी पता है कि ये जो कोड है सेम सेगमेंट में क्या बनाएगी, सेम एंगल बनाएगी. राइट, सो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. दैट इज वी नो बाय द हेल्प ऑफ द थ्योरम. सो आप देख सकते हैं ये CD के सेम साइड पे दो पॉइंट्स जो हैं आ रहे हैं. यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सेम साइड में आ रहे हैं ना, इसी सेगमेंट में आ रहे हैं, सेम सेगमेंट में. तो आप देख सकते हैं ये CD जो है वो A पे क्या एंगल बना रही है CAD, और B पे क्या बना रही है CBD. सो दोनों एंगल्स क्या है, सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं. सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी इक्वल विद द हेल्प ऑफ द थ्योरम. सो लेट मी जस्ट राइट दैट we know that angles in the same segment are equal. Right, so this is the theorem which we are using here. So yani ki that means CD makes equal angles at the points lying in the same, on the same side. That would be better, right? On the, let me just change the marker again, on the same side. You can see that is A and B. So आप देख सकते हैं A और B दोनों पॉइंट्स इस CD कोड के सेम साइड पे आ रहे हैं. You can see in the same segment. So let me first make some space above. So it's quite clear, that means angle CAD will be equal to angle CBD. The reason is angles in the same segment are equal, right? So again I have written the reason here. So this is what we have to prove in this question. You can see here. So it's a quite easy question. Just with the help of a single click of a theorem, we get the result here, right? So this is how you have to solve such type of questions here. So students, let us move on to the next question now. So this is going to be the last question of this chapter. So just you can see question number 12 here is that we have to prove that a cyclic parallelogram is a rectangle. So अगर आप ध्यान से देखें cyclic parallelogram. Now parallelogram क्या होता है, एक quadrilateral ही होता है. You can see because it is also having four sides. So you can also say cyclic parallelogram as cyclic quadrilateral, right? Now you can see we know that a cyclic quadrilateral is you can see quadrilateral which is lying within the circle. क्योंकि हमें पता है कि cyclic quadrilateral क्या होता है, जिसके चारों vertices जो है सर्कल की circumference पे लाई करते हैं. मैंने वो बताया था. So you can see ABCD is a cyclic quadrilateral when all the four points or you can say the vertices lie on the circle. So यहाँ पे हमें क्या करना है, इस cyclic parallelogram को rectangle prove करना है. Now मैंने यहाँ पे rectangle draw किया क्योंकि मुझे parallelogram को क्या प्रूव करना है, rectangle. So I have drawn already a rectangle in the circle, right? So ये एक्चुअल में अभी हमारे पास क्या है, cyclic parallelogram, बट हमें प्रूफ क्या करना है इसको, that it is a rectangle. Now कैसे प्रूव करेंगे, हमें पता है कि rectangle की प्रॉपर्टी होती है कि उसके चारों एंगल्स जो हैं वो कितने के होते हैं, 90 डिग्री के. सो अगर मैं यहाँ पे ये प्रूव कर दूं कि इसके चारों एंगल्स कितने के, 90 के, that means then we can say that this cyclic parallelogram is a rectangle, right? So now you can see it is a quadrilateral which is parallelogram here, right? So now
लेट मी जस्ट टेल यू कि यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं सॉल्यूशन की. यू कैन सी फर्स्ट. सो यहाँ पे सबसे पहले गिवन क्या है मुझे, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर. सो द गिवन थिंग इज दैट ABCD is a cyclic quadrilateral, or you can say parallelogram, right? Or you can also say quadrilateral. Now the next thing will be what we have to prove here. So यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, that this cyclic parallelogram is a rectangle, right? This is what we have to prove in this question here, right? तो कैसे प्रूव करेंगे? Let me just start off my proof here. So the first thing that will come into mind is कि जैसा कि हमें पता है कि ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, राइट? सो हमें पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की एक प्रॉपर्टी होती है दैट कि उसके अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है दैट इज 180 डिग्री. ये मैंने आपको बताया हुआ है. सो लेट मी जस्ट राइट दैट. सो वी नो दैट ABCD is a cyclic, let me just change the marker, quadrilateral. So you can see angle A plus angle C is equal to 180 degree. So this is the property of a cyclic quadrilateral कि उसके opposite angles का sum क्या होता है 180 degree. But ये एक cyclic parallelogram है और हमें पता है कि parallelogram के जो opposite angles होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में equal होते हैं, right? So इस हिसाब से तो angle A जो है वो C के equal भी होगा. So let me first write that thing also. But you can see ABCD is also a parallelogram. And we know that, let me just rub the space above. So you can see we know that opposite angles of a parallelogram are equal, right? So that means you can say angle A is equal to angle C. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल ए की वैल्यू किसके इक्वल है, एंगल सी के. और यहाँ पे हमने ये भी देखा कि एंगल ए प्लस सी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के. बिकॉज एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स का सम 180. सो अगर मैं यहाँ पे एंगल ए की जगह पे एंगल सी रख दूं, सो व्हाट इट विल बी, यू कैन सी नाउ सब्स्टिट्यूटिंग एंगल ए इक्वल टू एंगल सी in, let me just give it as equation number first. So what it will be, let me just tell you. So here let me just substitute A की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, C रख दूंगा. So यहाँ पे क्या आ जाएगा, you can see angle C plus ये angle C as it is equal to 180. So angle C plus C कितने हो गए, 2 angle C equal to 180. Now आपको पता है ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा. So that will be 180 divided by 2. So 290 जब 180. So कितना आ गया, 90 डिग्री. अब मुझे पता है कि एंगल सी और एंगल ए आपस में इक्वल है. सो यही एंगल ए की वैल्यू भी हो गई. सो यानी ये दोनों एंगल्स कितने के हो गए, 90 के. दैट इज नाउ वी नो, राइट? नाउ सिमिलरली दैट वी नो दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम. सो यहाँ पे पैरेललोग्राम के साथ साथ वाले एंगल्स का सम क्या होता है, 180. This is a property of a parallelogram, that the sum of the adjacent angles is, you can see, 180 degree, right? So let me just rub the space below. Now we know that sum of adjacent angles of a parallelogram is 180 डिग्री. सो यहां पे आप देख सकते हैं एंगल A प्लस B कितना हो जाएगा, इक्वल टू 180. नाउ मुझे पता है एंगल A की वैल्यू कितनी है, 90. सो 90 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180. अब ये 90 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का. सो 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री. यानी कि हमारे पास एंगल B भी कितना आ गया, 90. अब अगेन यू कैन सी अपोजिट एंगल्स of parallelogram
are equal. So let me first make some space above. That means कि अगर ये एंगल B 90 का है तो इसके अपोजिट एंगल D वो भी कितने का हो जाएगा? You can see that will be also of 90 degree because the property of a parallelogram that opposite angles of a parallelogram are equal. So this implies angle D is equal to angle B equal to 90 degree. So this implies angle D is also of 90 degree, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों एंगल्स जो है वो मैंने कितने के प्रूव कर दिए? 90 डिग्री के. सो वी कैन सी कैसे मैंने इस ABCD पैरेललोग्राम जो था साइक्लिक पैरेललोग्राम इसको क्या प्रूव कर दिया? रेक्टेंगल प्रूव कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि रेक्टेंगल के ही चारों एंगल्स जो है 90 के होते हैं, राइट? सो दिस इंप्लाइज ABCD cyclic parallelogram is a rectangle, right? Because the reason is all the angles are of 90 degrees. So you can see this is how we reached to the end of this chapter here. So I hope you have learned a lot about the questions and the theorems with the help of which we are going to solve it. So just what you have to do here is simply revise the theorems and understand where to actually apply the theorem so that you can get the result, right? So that was all from my side in this chapter. Thanks a lot for watching this video.